तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बाउंड्री इश्यू इन KDE, right? So this occurs when the KDE estimates density near the edges of the data range and causing the density to spill outside the valid range. Because it occurs because KDE uses symmetric kernel, जैसे कि Gaussian, और ये जो kernels हैं that they extend infinitely in both directions, right? And near edges, part of the kernel falls outside valid data ranges. And because of that, uh, the bias created and inaccurate density estimation took place. Right? इससे क्या होता है? Because of the boundary issue, what happens exactly? Overestimation or underestimation near the edges. Right? A problem boundary that is edges के near होता है. Then distorted probability distribution, inaccurate statistical conclusions, and poor model internal interpretation. अब इसका सॉल्यूशन हमने डिस्कस किया था, that is reflection method, right? What it does, this is a boundary correction technique where data near the boundary is mirrored, that is reflected across the boundary to prevent the leakage. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन मेथड याद रखना है हमें. The next we have lie factor. Lie factor क्या है? Lie factor is a statistical measure used to determine how much a graph or visual representation distorts the actual data. It helps evaluate when a chart presents information truthfully and accurately. A high lie factor indicates that the graph exaggerate or understates the real change in the data, making it potentially misleading. So high lie factor होना मतलब क्या होता है? ग्राफ जो है रियल चेंज इन डाटा को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो मिसलीडिंग रिजल्ट दिखा रहा है, राइट? तो lie factor compares graphic effect, that is the change shown visually in a graph, and sorry, data effect, the actual change in the numerical data. फॉर्मूला था आपका लाई फैक्टर इज इक्वल टू ग्राफिक इफेक्ट डिवाइडेड बाय डाटा इफेक्ट. हमने देखा अभी ग्राफिक इफेक्ट मतलब द चेंज शोन विजुअली इन ए ग्राफ, व्हाइल डाटा इफेक्ट मींस एक्चुअल चेंज. सो लाई फैक्टर is calculated as the ratio of the graphic effect to the data effect, indicating whether a visual representation accurately reflects the underlying data or not. Right. So lie factor is equal to 1 means perfect representation of the data. The graph accurately reflects the actual changes. If lie factor is greater than 1, this means the graph exaggerates the change. So visual effect is larger than the actual data change. And if less than 1, that means understates the change. So visual effect is smaller than the actual data change. तो 1 जब सेम रहता है, ग्रेटर देन 1 जब एग्जीगरेट करते हैं मतलब विजुअल इफेक्ट एक्चुअल डाटा सेंस से लार्जर दिखाते हैं. लाई फैक्टर लेस देन 1 मतलब विजुअल इफेक्ट स्मॉलर देन द एक्चुअल डाटा सेंस, राइट? सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, एक्चुअल सेल्स इन इंक्रीज फ्रॉम 100 to 120 यूनिट्स, data increase 20%. A graph usually makes the increase appear as 40%. तो क्या होगा? लाई फैक्टर 40 divided by 20, that is 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 1. That means the graph exaggerates the actual change by a factor of 2 and may mislead the viewers. Application like visualization evaluation में है, different scientific publication, business reports, statistical graphics, बहुत सारे applications हैं. Importance because it ensures honest and actual data representation, right? Improves transparency and credibility of the visualization, helps detect misleading graphs, and supports effective decision making based on correctly represented data. Remediation यही है कि it measures distortion in visual representation but does not assess whether the underlying data itself is correct or reliable. तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में कुछ डिस्टॉर्शन हुआ है या नहीं ये देखते हैं. बच्चों अगर डाटा ही प्रॉब्लमेटिक है
इसको ये चेक नहीं करता है, राइट। समझ में आ ही गया, वन मतलब एक्चुअल, ग्रेटर देन वन मतलब एग्जीगरेट द सेंस, लेस देन वन मतलब अंडर रिप्रेजेंट्स द सेंस। देन व्हाट इज ग्राफिक अफेक्ट? ग्राफिक अफेक्ट, ठीक है, normally very not frequently asked, but still you have to know. The graphic effect reflects or refers to how much a visual element like bar height or area changes in the graph. कितना change हो रहा है? If a bar doubles the height in the graph, that is the graphic effect. ठीक है? Then data effect मतलब the data effect refers to the actual numerical change in the data set. जो actual change हो रहा है data set में, उसको हम बोलते हैं data effect, right? If sales increase from 100 to 150, that is data effect is equal to 50 divided by 100 is 50% increase or 0.5. Then we have एक हमने रखा है कि लाइव फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट एंश्योर्स ट्रू डाटा विजुअलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करते हैं, राइट। Common causes of high lie factor, like using 3D charts unnecessarily, improper axis scaling, using area instead of length correctly, truncated or exaggerated axis, decorative graphs that distort perception. Then good graph versus bad graph. Good graph obviously तब होगा जब lie factor is equal to 1 होगा, right? And bad graph कब होगा? Lie factor either greater than 1 or less than 1. So you can say that lie factor is nothing but a measure of truthfulness in graphs, defined as the ratio of graphical effect to the data effect, actual data effect. A value close to 1 indicates an actual or accurate graph, while values significantly above or below indicate distortion. It is an important concept in data visualization to ensure honesty and clarity in presenting data. Then dual axis problem. What is that? It is also asked frequently. Dual axis chart is a type of graph that uses two different y-axis on the same plot. सेम प्लॉट में अगर दो अलग अलग y एक्सिस यूज करते हैं तब हम बोलते हैं डुअल एक्सिस chart, right? Now it is commonly used to compare two variables with different scales or unit. अलग अलग स्केल में अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं तो ये यूज करते हैं, like left y axis means revenue and right y axis means percentage in growth. While useful, dual axis search can sometimes create false or misleading relationships known as the dual axis problem. जब ये dual axis search अगर misleading information और relationship दिखाते हैं, then it is known as dual axis problem, right? So there is no direct mathematical formula, but the relationship is interpreted visually. Tan A plotted in y1 axis, tan B plotted to on the y2 axis. जैसे अभी हमने बोला था ना, लेफ्ट y axis में revenue, right y axis में percentage in growth. Now examples of false correlation. Core problem तो यह है कि scaling manipulation issue. When axes are scaled differently, the visual trends can be artificially aligned. This can make unrelated data appear strongly correlated and weak relationship appear strong. Random trends appear meaningful. ये हो सकता है, right? और false correlation का example जैसे ice cream sales increase in summer, shark attacks also increase in summer. अब इसका मतलब इन दोनों से क्या कुछ रिलेशन है? So if plotted using dual axis, क्या होगा? Ice cream sales on the left axis, while shark attack count on the right axis. Both lines may rise together, and that will suggest correlation. But इसका तो reality में कोई correlation नहीं है. कहाँ ice cream sale और shark attack दोनों correlated है? Of course, no, right? So that's it. That is no causal relationship. How false correlation is created? Adjusting y-axis uh, scale ranges, compressing or stretching one axis, aligning peaks and dips visually, using different units with it without normalization. Visualization effect हो सकता है.
makes two unrelated trends look identical. प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? मिस इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग बिजनेस डिसीजन, ओवर एस्टिमेशन ऑफ रिलेशन, लॉस ऑफ डाटा क्रेडिबिलिटी, बायस एनालिटिकल कंक्लूजन। कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम डुअल एक्सिस प्रॉब्लम को? हाउ टू अवॉइड डुअल एक्सिस प्रॉब्लम? So, just a minute. Yeah, we can use separate graphs instead of dual axis. जरूरत ही क्या है दोनों एक्सिस यूज करने के? आप दो अलग अलग ग्राफ यूज करो, right? You can use two separate graphs. Normalize data before comparison. Use correlation analysis instead of visual adjustment, and clearly label axis and scaling. Right? Avoid unnecessary scaling manipulation. कब इसको एक्सेप्ट कर सकते हो? इट इज एक्सेप्टेबल व्हेन स्केल्स आर क्लियरली एक्सप्लेन, देयर इज नो अटेम्प्ट टू मिसलीड, वेरिएबल्स आर लॉजिकली रिलेटेड एंड प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन इज अप्लाइड। देन आपका है लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। सॉरी, log transformation is a mathematical technique used to convert data that grows exponentially or is highly skewed into a more linear and normalized form. So इसको कब यूज करते हैं? हम जब जो जो रहता है आपका एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब ठीक है, या तो आप बोल सकते हो हाईली स्क्यूड है। हाईली स्क्यूड का मतलब एक साइड बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तब हम इसको अगर अब लिनियर बनाना पड़ेगा नॉर्मलाइज फॉर्म में, तब हम लॉग ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। इसको हम एमएल में यूज करते हैं, डेटा एज अ डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक। स्टैटिस्टिक्स का तो है ही, फाइनेंशियल एंड बायोलॉजिकल डेटा एनालिसिस में यूज करते हैं। So a log transformation applies the logarithmic function to each value in a data set to reduce scale differences and stabilize the variance. फॉर्मूला सिंपल सा है, y इज इक्वल लॉग ऑफ x, x तो ओरिजिनल डेटा है, y मतलब ट्रांसफॉर्म वैल्यू, राइट? आप लोगारिथम बेस ई भी यूज कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2.718, या तो आप बेस 10 यूज कर सकते हो। नेचुरल लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जब हम बेस यूज ई यूज करते हैं, और बेस 10 लॉग ट्रांसफॉर्मेशन जब बेस 10 यूज करते हैं। इंजीनियरिंग और डाटा स्केलिंग में हम ये यूज करते हैं। लॉग ट्रांसफॉर्मेशन विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू log x plus 1, it is used when sorry, data set contains zero values. तो अगर हम 1 ऐड करेंगे तो लॉगरिथम ऑफ जीरो को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लॉगरिथम ऑफ जीरो क्या होता है, आपका अनडिफाइंड होता है, राइट? ये आ गया समझ में? एक्सपोनेंशियल को लिनियर में कन्वर्ट करने का ही तरीका होता है आपका ये लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन डेटा बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल में ग्रो कर रहे हैं, और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये ठीक हो गया है, ठीक है? y इज इक्वल टू log a प्लस px। ये एग्जांपल दिया है 1 2 2 4 3 8 4 16। इसको अगर हम लॉग में ट्रांसफॉर्म करें तो वैल्यू उसको लॉगरिथम ऑफ y ये इतना आएगा, कम हो जाएगा, डेटा स्क्यूड हो जाएगा। पहले पहले स्क्यूड था, सॉरी, इसके बाद नॉर्मलाइज होगा, large value dominate नहीं कर पाएगा, distribution becomes closer to normal and relationship becomes linear। कहाँ यूज करते हैं हम? मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडलिंग में, फाइनेंशियल डेटा में, बायोलॉजिकल ग्रोथ डेटा में, मशीन लर्निंग, रिग्रेशन मॉडल्स, इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, ये सब में यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है? because it reduces impact of the extreme values, converts multiplicative relationship to additive ones, improves interpretability, enhances model accuracy। हाँ, लिमिटेशन ये है कि ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू निगेटिव वैल्यूज, राइट? जीरो वैल्यू को हम डील कर सकते हैं, इसको एडजस्टमेंट करते हैं, शिफ्ट करते हैं, लॉगरिथम एक्स प्लस 1 करते हैं, राइट? में डिस्टॉर्ट इंटरप्रिटेशन इफ मिस यूज। देन ट्री मैप एंड पाई चार्ट है। ट्री मैप एंड पाई चार्ट, आई होप पाई चार्ट यू ऑल नो। बोथ ट्री मैप एंड पाई चार्ट दोनों को ही हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट part to whole relationship in the data visualization, but they differ in structure, readability and effectiveness। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट होता है, स्लाइसेस में डिवाइड करते हैं हम उसको, और हर एक स्लाइड जो है एक प्रोपोर्शन ऑफ डाटा रिप्रेजेंट करते हैं टू द होल।
तो पूरा जो सर्कल है उसमें 100% है, इस स्लाइड में परसेंटेज ऑफ कैटेगरी। ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल 100। ये समझने में आसान होता है। वेज टू स्मॉल नंबर ऑफ कैटेगरीज शोस सिंपल प्रोपोर्शन कंपैरिजन यूजेस एंगल एंड स्लाइसेस। अगर बहुत ज्यादा कैटेगरी होगा तब पाई चार्ट का प्रॉब्लम होगा, इट बिकम्स क्लटर्ड with many categories. In that case, hard to compare similar size slices and less accurate for detailed comparison. Tree map क्या है? Rectangular visualization, where each category is known as a rectangle, right? Just a minute. Tree idea क्या है? Large rectangle is equal to larger value. Nested stacks are possible, hierarchical data. It uses space efficiently, handles large data set well, so hierarchy and proportion together, easier comparison in many categories. तो अगर इन दोनों का कंपेयर करेंगे, पाई चार्ट सर्कुलर है, ट्री मैप आपका रेक्टेंगुलर है। डाटा कैपेसिटी स्मॉलर डाटा सेट के लिए पाई चार्ट ठीक है, लार्ज के लिए रेक्टेंगुलर और ट्री मैप। ठीक है, कंपैरिजन हार्ड फॉर सिमिलर वैल्यूज, बाय इजियर कंपैरिजन कर सकते हैं हम, राइट। एंड देन space it uses, pie chart is less efficient, but this tree map is highly efficient, right? हायरार्किकल डाटा सपोर्ट करते हैं पाई चार्ट, बट ट्री मैप में नहीं, सॉरी पाई चार्ट में नहीं करते। ऑब्वियसली पाई चार्ट में तो प्रोपोर्शन दिखाते हैं, तो यहाँ हायरार्किकल हम यूज नहीं करते हैं, बट ट्री मैप में ये एडवांटेज है कि ये सपोर्ट करते हैं हायरार्किकल डाटा। और एक्यूरेसी इन कंपैरिजन पाई चार्ट से ज़्यादा हाई एक्यूरेसी है ट्री मैप का। विजुअल क्लियरिटी क्या होता है, ड्रॉप्स विथ मेनी स्लाइसेस, अगर बहुत ज़्यादा कैटेगरी हो जाएगा तो क्लैरिटी थोड़ा कम हो जाएगा, बात जो ट्री मैप है उसमें क्लैरिटी को मेंटेन करते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ट्री मैप इज बेटर बिकॉज दे अलो डायरेक्ट साइज कंपैरिजन using rectangles. Humans compare length and area better than angles. क्योंकि ट्री आपका पाई चार्ट में तो एंगल्स है, तो ह्यूमन के लिए तो लेंथ एंड एरिया ज़रा रियलिस्टिक होता है, ज़रा अच्छे से वो कंपेयर कर पाते हैं, मेनी कैटेगरी को दिखा पाते हैं, हायरार्किकल को सपोर्ट करते हैं, कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट का एग्जांपल है 40, 35% प्लस 25%। तो ये तीन कैटेगरी के लिए तो ठीक है, बट जब हम यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरी ABCDEFG तब ट्री में भी क्लियरली शो कर सकते हैं, राइट। देन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स इन ए प्लान यूजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द रेडियस एंड एंगल फ्रॉम ए reference direction. And they are commonly used in circular graphs like radar chart, y direction maps, cylindrical, cyclical data visualization. इसको डिफाइन करेंगे हम r, थी, a polar in point in polar coordinate defined as or represented as r, theta, sorry। r तो रेडियस हो गया, समझ में आ गया, r is the radius distance from the origin and theta is the angle from reference axis। इसको जब हम कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं, सो लेट्स से सॉरी कार्टेशियन को अगर हम पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? से वी नीड टू कन्वर्ट एक्स वाई टू पोलर, तो आर होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा होगा टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो सिंपल फॉर्मूला व्हेन वी आर कन्वर्टिंग ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू पोलर, that coordinate say x y to polar, so r is equal to square root of x square plus y square, theta is equal to tan inverse y by x। ठीक है, तो यहाँ पे पोलर प्लॉट्स में रहता है इस मैप अराउंड अ सर्कल, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, एंगल रिप्रेजेंट्स कैटेगरी और डायरेक्शन। प्रॉब्लम क्या है? आउटर पॉइंट्स अपीयर लार्जर because equal changes in radius do not produce equal visual perception. Outer arcs cover more visual aspects than inner ones। ठीक है, आर्कलेट को कैसे कंक्लूड करते हैं? R इंटू थीटा। विजुअल डिस्टॉर्शन इफेक्ट होता है, स्मॉल इंक्रीज इन आउटलायर रेडियस, आउटर रेडियस लुक विजुअली लार्ज, इनर वैल्यूज अपीयर compressed,
outer region seem exaggerated, right? So near the center, small visual area, and far from center, large circular area. So even data increments even equal data increment look like bigger outside and smaller. अगर inside होगा तो smaller look खाते हैं और outside होगा तो bigger होता है. ठीक है, जैसे कि suppose A is equal to 10, B is equal to 20. Now, given the difference is only 10 units, B looks much larger. क्यों? It is placed far from the center, while the circular spread amplifies the visual effect. Right? इसको रेडर शर्ट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सर्कुलर हीट मैप में यूज़ करते हैं, वन डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, क्लॉक साइक स्टाइल विजुअलाइजेशन में यूज़ करते हैं. रिड्यूस करने के लिए यू यूज़ कार्टेशियन प्लॉट्स फॉर एक्यूरेट कंपैरिजन. देन हमारा है हीट मैप एंड कोरिलेशन. पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. सॉरी फॉर दैट. हीट मैप क्या है? A graphical representation of data where values in matrix are displayed using color. So when high color means high correlation, less color means less correlation, right? High माना है dark की बात कर रहा हूँ. Dark मतलब strong और light मतलब weak or no correlation. Usually red usually positive correlation, blue usually negative correlation. ठीक है. Formula is covariance of xy divided by sigma x into sigma y. Sigma and sigma x and y represent standard deviation of x and y, right? ये सब हमने कर लिया था. इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें पावरफुली, ये हमें पूरा क्लियरली डिपिक्ट करते कोरिलेशन को, राइट? देन डुअल एक्सिस लाइन चार्ट भी हमने देख लिया था. डुअल एक्सिस होने से मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो क्लियर. के डी का बाउंड्री प्रॉब्लम भी हमने डिस्कस कर लिया. टी मैप डिस्कस कर लिया. So ultimately we have, and then polar coordinate also discussed. Say xy to polar coordinate, then r is equal to x square plus y square root over s square plus y square, and theta is equal to tan inverse y by x. Okay, so we have discussed everything. Everything means those questions which I feel that you have to know, right? We cannot say about the examiner may ask anything, but if you have clear concept on this question, then you can directly defend. That's it. And next, I'll come up with some more important questions. Right? Thank you.